శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. వేడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవంలో పాల్గొన్న భక్తులందరూ కూడా సంకల్పం చెప్పుకోవాల్సింది. ముందుగా నేను చెప్పిన విధంగా అందరూ తిరిగి చెప్పవలను. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధగే నిధగేర్తినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్న ఉపశాంతగే. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అద్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే సఖాప్తే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః దివ్య సన్నిధౌ అస్మిన్ వర్తమానేన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణం మధ్యే శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః ప్రీత్యర్థం మమ గోత్రోద్భవస్య. ఇప్పుడు మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోవాలి. నామధేయస్య. ఇప్పుడు మీ యొక్క పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య. ఇప్పుడు భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం. ఇప్పుడు కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, మీ యొక్క కోరికలను ప్రార్థనలను స్వామివారికి విన్నవించుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం ఇష్ట కామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం శ్రీ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿನಃ ಕರುಣಾಕಟಾಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಸತ್ಸಂತಾನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಲೋಕಕ್ಷೇಮಾರ್ಥಂ ಶ್ರೀಭೂಮಿ ನೀಲಾ ಸಮೇತಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿನಃ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಂ ಶ್ರೀ ವೈಖಾನಸ ದಿವ್ಯ ಆಗಮೋಕ್ತ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಅಹಂ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಖೇನ ಕಾರಯಿಷ್ಯೆ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ஓம் நமோ வெங்கடேசாய். குன்றமேந்தி குளிர்மழை காத்தவன் அன்று ஞாலம் அளந்தபிரான் பரன் சென்று சேர்த்தொழ நம் வினை ஒயுமே என்று அந்த வேங்கடவனை செவித்து கொண்டு இன்றைய கல்யாண உற்சவத்திற்காக நாம் திருமலை கோவில் உள்ளே இருக்கும் சம்பங்கி பிராகாரத்தில் உள்ள கல்யாண மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பினை செவிக்க இருக்கிறோம். இந்த கல்யாண உற்சவத்தின் நேரடி ஒளிபரப்பின் வர்ணனையாளர் திருமதி அருணா. இதோ பக்தர்கள் எல்லாம் கூடி பகவானுடைய கல்யாண உற்சவத்தை சேவிப்பதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நாமும் சங்கல்ப மந்திரங்களை கேட்டோம். அந்த பகவானுடைய கைங்கரியத்திலே பங்கு கொண்டு நம்முடைய கோரிக்கைகளை விண்ணப்பிக்கலாம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா. பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாஜனத்துடன் ஆரம்பமாகிறது திருக்கல்யாண மகோத்சவம். சேனா முதலி என்னும் இந்த விஸ்வக்சேனரை ஆராதனை செய்தால் நமக்கு அந்த பெருமாள் கோவில்களிலே சேனா முதலியாருக்குத்தான் முதலில் உற்சவம் நடைபெறும். அப்படி வைஷ்ணவ சித்தாந்தப்படி நமக்கு முதல் ஆச்சாரியன் குரு அந்த எம்பெருமான் ஸ்ரீ நாராயணனே. அடுத்தவர் தாயார். பெருமாளிடமிருந்து அந்த வேத உபதேசம் பெற்ற விஸ்வக்சேனருக்கு உபதேசம் செய்தார். ஆகவே ஆச்சாரியர்கள் வரிசையில் விஸ்வக்சேனர் மூன்றாவதாக போற்றப்படுகிறார். அப்படி விஸ்வக்சேனர் பொதுவாக அமர்ந்த நிலையிலே 4 திருக்கரங்களுடன் காட்சியளித்து மேல் 2 திருக்கரங்களில் செங்கு சக்கரம், வலது கீழ் 2 கரங்களிலே அபயஹஸ்தம் போலவும் காட்டி அந்த அமர்ந்திருக்கும் நிலையிலே வலதுபுறம் செங்கோல் தாங்கியபடி இருக்கும் கோவில்களிலே நாம் சேவிக்கலாம். அப்படிப்பட்ட சேனா முதலியார், அந்த சேனா முதலியாருக்குத்தான் முதலில் நாம் இப்பொழுது ஆராதனை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. அதை சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணிய வாஜனம் கலச ஆராதனையை நாம் சேவிக்க இருக்கிறோம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த பரந்தாமருடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நாம் சேவிக்க இருக்கிறோம். சேஷாத்ரிவாச்சனः ஸ்ரீபூமணீலா சமேத ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசசுவாமினः பிரீத்யர்த்தம் ஸ்ரீ வைகானச பகவத்சாஸ்த்ரோக்தமார்கேண கல்யாணார்த்தக்ரியமான வைவாहिक மகோத்சவகர்மாங்கம் சத்யோங்கர்மாங்கம் ரக்ஷாபந்தனகர்மாங்கம் औपासनाग्नौ आघारकर्मांगम मांगल्याराधनकर्मांगम प्रधानहोमकर्मांगम लाजहोमकर्मांगम सर्वोपकरणशुद्ध्यर्थं प्रत्यर्थं शान्त्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्यावाचनं करिष्यन्ने आदौ विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये रङ्गं करकाराधनं करिष्ये ओं धारासमानशेषो सारात्सारेत्सो परिपूरितेषु अपोऽपि गृह्णन् प्रतिपादकृष्णोत्ताकं सर्वकं शर्मा इदमावस्यवा श्रुतमा शाश्वता शाश्वतमा श्वाश्वतमा पूता पुतमा पुण्या पुण्यतमा मेद्या मेज्यमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्मपवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ओं येते शतं वरुणके सहस्रं विघ्निघात्पाशाविता पुरुत्र तेभ्यो नितुष्णुर्विश्वे देवामञ्चमृतस्वस्य नरके पाञ्चभौतिकमवाहयामि तिलेवर्णमवाहयामि शेषमवाहयामि रक्तान्मृतमवाहयामि कलस्त्रिमवाहयामि वरुणागमः इदमासनं वरुणागमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणागमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणागमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणागमः सुप्रीतः वरदा भवतु विश्वक्सेनं स्वरूपाहं शङ्खचक्रसमन्वितं जयापतिं शृङ्गकेतं सुश्रुतवाहनं
पूर्वास दक्षिणा मुखमत्सयेत् होमाग्नेयस्मादजामहे त्वा विश्वेशदात्तमितमनुशम्भो वयन्तेन दत्तां परेषामधीशोपदानामनादिः यामेडस्तां दरितां ददातु पद्माकारमण्डले ॐ विषक्सेन मवाहयामि शान्तमवाहयामि हरमवाहयामि अमितमवाहयामि सत्पत्नीं सूत्रवतीमवाहयामि वामे जयामवाहयामि विश्वक्सेनाग्रमः इदमासनं विश्वक्सेनाग्रमः अर्घ्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आदरणीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदः भवतु भग्नसपुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सपुण्याहं करोमि कुरुष्व प्रोक्षतम् अस्मो प्रजापतिप्रगतां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वाधीतयः शिवानि वर्धन्तां स्वानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वाधीतयः शिवानि वर्धन्तां स्वानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वाधीतयः शिवानि वर्धन्तां स्वानि त्वमतो देवा अवन्तनो गतो विष्णुविचक्रमे प्रसज्ञा सतदाभिः इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधानदे पदं समूढमस्य माकं सुरे त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुर्गोपासाभ्यः तदधर्माणि धारकन् विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो अवतानि पुष्पसे इन्द्रस्य गज्जस्सखा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि वचक्षुरादम् अद्यप्रासो पण्यवो जाग्रवागं वसविन्दते विष्णोर्गत्परमं पदं भद्रं कन्ने विष्णुगामदेवा भद्रं पश्येमाक्षविजत्राः स्त्रीरङ्गै एतश्चवागं दस्तनो विरिपशे मदेवगितं यदायुः कृतमिन्वसरतो अन्तिदेवा गत्वा नश्चक्राजरसं तनूना पुत्रा स्वगत्यपतवन्दमानो भत्यारीषता घर्गन्तोः अदित्योरन्तरिक्षं मविधर्माता सविता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिपञ्चजनामैतर्जनित्वं यत्पुण्यं नक्षत्रद्गुर्वेदावभ्यषं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रण्यैते यात् सूर्यो गच्छेत् यत्र गण्यं पश्येत् तावत् गुरुवेदगत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते श्री श्रीनिवासना वैवाहिक महोत्सवकर्माङ्गं पुण्याङ्कणे पुण्यां भवन्तो अब्रवन्तो पुण्याङ्कर्मणोऽस्तु पुण्याः भवन्तो अब्रवन्तो पुण्याङ्कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो अब्रवन्तो पुण्याहङ्कर्मणोऽस्तु स्वस्तिरिन्द्रो वज्रवास्मनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिरस्तार्क्षोष्णो संस्कृतदातो प्राणानागम्या कस्यां सूतो श्री श्रीनिवासना वैवाहिक महोत्सवकर्माङ्गं पुण्याङ्कणे पुण्यामस्ति भवन्तो अब्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यास्मिन् भवन्तो अब्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यास्मिन् भवन्तो अब्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति मृद्यास्महव्यै नमसो मसद्या मित्रन्दमृतगन्नो अस्तु अनुराधान विषा वर्धयन्तः तदञ्जीवमृतस्वीराः प्राणानागम्यान् अस्यां सूतो श्री श्रीनिवासना वैवाहिक महोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्मणि पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मर्जितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामगाभवस्थानवोर्जेतसातना महेरणागचक्षसे व्यवसितमस्य वाजगते घनः प्रदीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमा भोगस्य क्षया गजन्मता आपो जनगता जनः दिविस्रगस्वान्तरिक्षतव्या सम्भवद्ब्रह्मवक्षसमसि तमवक्षसागत्वा होमानस्य वर्जनः पवित्रेणर्षणिः यः पोतास पुनातु मां पुणन्तु मादेव जनाः पुणन्तमनबोधिया पुणन्त विश्व आगमः यदवेद पवित्रवते पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवतेत्यद अग्ने कर्ता कृतो कुम्भृणो यत्ते पवित्रपक्षिणे अग्निवतमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण शिवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुणदे दैव्याघात् यस्यै भक्त्यै स्तनुवा विदपृष्टाः तया समाद्येषु तया गौरहीनां वै स्वारस्तिर्मापणातो पादपर्णे शिरोमगोभूः या वा पृथिवीतकसापगोभिः ऋतावरी यज्ञिके मापणीतां मृगद्भ्यस्तुभिः वर्जुष्टैर्दे वन्दभिः अग्ने दक्षैः पुणाहिमां येन देवापुणता येनापो दिव्यङ्गतः तेन दिव्येण ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुणीमहे यः पावमानीरत्येति त्रिविस्सम्प्रकम्बसं सर्वकं सबूतमश्नाति सवितं मातरिष्मणा हवामानीर्यो अद्येति त्रिविस्सम्प्रकम्बसं तस्मै सुरस्य दुःखे क्षेरकं सत्कृमदोदकं हवामाने स्वस्यगने उदगाही पयस्वते त्रिविस्सम्मृतोरसः ब्राह्मणे शमृत
समृतगं विधं मानिर्दिशन्तनः इमं लोकमदो अभं कामान् समर्थगन्तनः देवैः समापृताः हवामाने स्वस्यगणे सुतगाहीकृतश्रुतः त्रिविसम्मृतोरसः ब्राह्मणे समृतगं विधं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुरदेशदा तेन सहस्रधारेण हवामान्यप्रणन्तमान् प्राजापत्यं पवित्रं सदोद्यामकं विरण्मयं तेन ब्रह्मविदाभयं भूतं ब्रह्म पुणीमहे इन्द्रस्वमेधे सकमापुनातो सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रवणाभिपुनातमान् यदवेदामोद्यगन्त्यापुनातो तच्छंयोरावृणीमहे गातुं विज्ञागा गातुं विज्ञपदगे दैवी सुस्तरस्तनः तस्निर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिघातबेढजं षण्णोऽस्तिपदे चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 देवार्तिको मात्रयन्तां दक्षिणागां दिशमाशापुतरो मात्रयन्तां प्रदेच्यां दिशकृषा प्रभो मात्रयन्तामदीच्यां दस्याघोषयो नस्तयो मात्रयन्ताम् ऊर्ध्वागां दिशज्ञसंवत्सरो यज्ञधर्मात्रयन्तां रोधराधरैर्नागेभ्यो मात्रयन्ताम् ॐ अणोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहागां निगतोऽस्तुन्तोः तमकृतं पश्यति वेतशोको धातुप्रसादात् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रोवन्ति तस्मात् सप्ताचिदस्समिदः सप्त जिह्वा सप्त इमे लोका इडुचरन्ति प्राणा गुहासगां निगिताः सप्त सप्त अतः समुद्राग्रे सर्वेऽस्मास्यन्तन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोढयोरसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा वरुणागमः पुनःपाद्यं प्रणोग्यं प्रणाचर्यं समर्पयामि यदा सुखं यदा स्थलं प्रतिष्ठापयामि सुमनार्थं क्षेमाय ஓம் நமோ வெங்கடேசாய். விஸ்வக்சேன் ஆராதனை சுத்தி புண்ணியாவஜனத்தை தொடர்ந்து இப்பொழுது நாம் அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை செவிக்க இருக்கிறோம். அங்குரார்ப்பணம் என்பது திருமுலை சாற்றுதல் என்று பெயர். இந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் இப்பொழுது அங்குரார்ப்பணம் என்றால் அந்த தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் செய்யும் கைங்கரியமே அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். திருமலை வேங்கடவனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே நாம் இப்பொழுது அங்குரார்ப்பணம் என்ற கைங்கரியத்தை, அதாவது திருமுலை சாற்றுதல் என்று சொல்வார்கள். மண் பாலிகைகளிலே நவதானியங்களை சேர்த்து அதிலே நீர் திருத்துழாய் சேர்த்து பூஜை செய்து தேவர்களை ஆவாகனம் செய்யும் கைங்கரியம். அப்படி இதோ இப்பொழுது அந்த பகவானுக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். கல்யாண உற்சவத்திலே விஸ்வக்சேன ஆராதனை முடித்துக்கொண்டு இதோ கலியுக வைகுண்டமாக திகழும் திருமலை திருப்பதி புண்ணிய கஷேத்திரத்திலே ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதனாய் மலையப்ப சுவாமியினுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. எம்பெருமான் திருவேங்கடவன் பத்மாவதி தாயாரை விதமாக திருமணம் செய்தார். ஸ்ரீனிவாசன் திருமலையிலே உள்ள காட்டுப்பகுதியிலே அலைந்து திரிந்து தினமும் இது போன்ற வாழ்க்கையை வயங்களிலிருந்தே சற்று மாறுபட்டு யோசித்து மலையிலிருந்த பூக்கள் நிறைந்த பகுதியான பூந்தோட்டத்திற்கு வந்தாராம். அங்கே பத்மாவதி தாயார் தன்னுடைய தோழிகளுடன் பூக்களை பந்தாக்கி கொண்டு பந்தாட்டம் விளையாடி கொண்டிருந்த பொழுது பார்த்தார். அவருக்கு பத்மாவதி தாயார் யார் என்றே தெரியாது. ஆனால் அவரை கண்டது அவர் மீது அன்பு கொண்டாராம். பின் தான் தாயாரான வகுலாதேவியை அந்த முன்பிறவியிலே கிருஷ்ணாவதாரத்திலே யசோதையாக இருந்த அவரிடம் சென்று தான் பத்மாவதி தேவியை விரும்புவதாகவும் அவரை திருமணம் செய்து கொள்ளப் போவதாகவும் ஸ்ரீனிவாசன் கூறுகிறான். வகுலாதேவி மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்து உடனடியாக ஆகாசராஜனின் புதல்வியான பத்மாவதியை பெண் கேட்டு திருமணம் செய்து கொண்டு, அதாவது கையில் சல்லி காசு கூட கிடையாது, உடனே குபேரனிடம் கடன் வாங்கி திருமணத்தை இனிதே செய்து முடித்தார்களாம். அப்படி கலியுகம் முடியும் வரை வட்டியை செலுத்தி அதன் பின் அசல் ரொக்கத்தை கொடுப்பதாக குபேரனிடம் கூறினாராம். அப்படிப்பட்ட வேங்கடவனுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே திருமலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை முடித்துக்கொண்டு ரக்ஷா பூஜையை சேவிக்க இருக்கிறோம். ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. கோவிந்தா கோவிந்தா.
ஓம் ஷண்ணுதத்தாம் விவர்த்தாம் சம்பிரகிருமிதகே மிருதாகாம் ஓம் சேஷமவாஹயாமி சாஸ்திரேஷமவாஹயாமி அனந்தமவாஹயாமி நாகராஜமவாஹயாமி சேஷாகிரமஹாகிரமாசனம் சேஷாகிரமஹ பாஜ்யம் சமர்ப்பயாமி யர்க்யம் சமர்ப்பயாமி ஆச்சமணியம் சமர்ப்பயாமி சேஷாகிரமஹ புண்ணியபுஷ்பைः பூஜயாமி சேஷாகிரமஹ குடோபஹாரं நிவேदयामि ताम्बूलं समर्पयामि ओम स्वस्ति नो तामस्विनावक स्वस्ति देवीर्नर्वणः स्वस्ति पूषा सुरोधातनस्तस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतना स्वस्तगे वयोब्रवामहे समं वस्ति भुवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं वस्तगे स्तग आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तगे वैश्वानरो स्वस्तगे देवा अवन्तर्भो स्वस्तगे स्तनो रुद्रभातं हासः स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्तिरगिन्दश्चाग्निस्तनो आदिते कृते स्वस्ति बन्धामनोचरेम सूर्याचं तपसा आविवा पुनर्ददाग्नता जानता सङ्गमेमहे स्वस्तगनन्ता क्षमृष्णे महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरग्धविन्दसकं समत्स बृहद्य शोणाविवारुहेम हं होमुचमाङ्गस्त्यात्रयं मनसा चतार्क्षं भगतमानुशरणं प्रपद्येशं भादेशवगन्नोऽस्तु शुभकं शुभं शेषाग्रहः सर्वोपचारान् समर्पयामि ஓம் நமோ வெங்கடேசாய. திருவேங்கடமுடியான் திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷா பூஜையை தொடர்ந்து ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். ரக்ஷா பந்தனம் என்பது காப்பு கட்டுதல் என்று பெயர். திருவேங்கடமுடையானுக்கும் அந்த நாச்சிமார்களுக்கும் கரங்களிலே கட்டப்படும் கயிற்றிற்கு முறையை பூஜை செய்தார் அர்ச்சக சுவாமி. அதைத் தொடர்ந்து இப்பொழுது நாம் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை சேவிக்க இருக்கிறோம். திருவேங்கடவனின் கல்யாண உற்சவத்திலே மூவருக்குமாக சேர்ந்து ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்வார்கள். இந்த நேரத்திலே பெருமாளை விதமாக நினைத்து பார்க்கிறேன். பெருமாளுக்கு தாமோதரன் என்ற பெயரும் உண்டு. தாமம் என்றால் கயிறு, கயிற்றால் கட்டுண்டதால் தாமோதரன் என்ற பெயர் பெற்றான். இந்த உலகை படைத்து காத்து அருள் புரிபவன் எம்பெருமான். பரவாச தேவனாக நித்திய சூரிகளால் எந்த நேரமும் வழிபடும் நிலையில் பரமபதத்திலே எழுந்தருளியுள்ளான். அறியாமையாகிய இருளில் மூழ்கி சம்சாரமாகிய கடலில் விழுந்து நோவுபடும் மக்களை காத்து அருள் புரிந்து எளிய மக்களுடன் தானும் ஒருவனாக கலந்து பழகி திருத்தி திருவுள்ளம் பற்றினான். எனவே ஆதியஞ்சோதி உருவை அங்கு வைத்து இந்த பூ உலகிலே பிறந்து படாதன பட்டு காடு மேடெல்லாம் திரிந்தார்களாம். அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு இதோ திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அத்தகைய கிருஷ்ணாவ காலத்திலே கோகுலத்தில் வாழ்ந்த கோபியர்களின் மீது அன்பு செலுத்தி அவர்கள் இல்லம் தேடி சென்று அங்கே இருக்கும் வெண்ணெயை திருடி தின்று மகிழ்ந்தானாம். தன் அடியார்கள் இல்லங்களில் அமுது உண்பதை விரும்புவான். விதுரன் மாளிகைக்கு சென்று கஞ்சி குடிப்பதைப் போல் அவர்கள் வெண்ணெயை எல்லாம் உண்ணு மகிழ்வான். கண்ணனின் பெயரையும் பெருமையும் அவர் யார் என்பதையும் அறியாத ஆயிரக்கொல்ல பெண்கள் கண்ணனின் தாயாகிய யசோதையிடம் சென்று கூறுவார்களாம். அந்த யசோதை நம்ப மாட்டாள். ஏனென்றால் அவனுடைய தீராத விளையாட்டுகள் அவளுக்கு தெரியும். ஆக அப்படி அந்த யசோதா தேவி யார் என் கண்ணன் அப்படியெல்லாம் செய்ய மாட்டான் என்று அந்த கண்ணனுக்காக பரிந்து பேசுவாளாம். இவ்வாறாக அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே இதோ எம்பெருமானுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. ஏடு கொண்டல்வாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று, சப்தகிரி வாசனே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா அந்த பகவானை சேவிக்கலாம். அடுத்து நாச்சிமார்களை ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். பெருமான் நம்மை அநேக கஷ்டங்களிலிருந்து காப்பவன். வைஷ்ணவம் சரணாகதிக்கு பெரிய பீடமாக இருந்து வருகிறது. பிரகல்லாதன் திரிகரண சுத்தியாக சுவாமியை நம்பியவன். ஹிரண்ய கசிப்பனை வதம் செய்த பின் பெருமாள் நரசிம்மர் மிகவும் கோபமாக உக்ரரூபத்துடன் இருந்த பொழுது லக்ஷ்மி தாயார் கூட அருகிலே செல்வதற்கு மிகவும் பயப்படுவாளாம். அப்படி அந்த பகவான் சுவாமியின் அருகில் சென்று சாஷ்டாமாக நமஸ்காரம் செய்து அவர் மீது கோபம் தணிய பெருமாளை சேவித்து அவருடைய கோபத்தை அடக்கச் செய்தான் பிரகல்லாதன். பெருமாளை நாம் சரணாகதி அடைந்தால்
நிச்சயம் நமக்கு தயையுடன் அனுகிரகம் செய்வார். மனதிற்கு சந்தோஷத்தை கொடுப்பார். ராமாயணத்திலே 7 மலைகளையும் விரிவாக அதிலே வேங்கடத்தை யுத்த காண்டத்திற்கு உதாரணமாக கூறினார். யுத்த காண்டத்திலே பாவங்கள் செய்தவர்கள் உயிரிழந்து புண்ணியம் செய்தவர்கள் மீந்தனர். வேம் என்றால் பாவம், கடை என்றால் போக்குபவன். அப்படியென்றால் பாவங்களை எல்லாம் போக்கக்கூடிய கடவுளானான். இதோ லக்ஷ்மி பிராட்டி, அதாவது ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை முடித்து அடுத்து பூமி பிராட்டிக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா, வசுந்தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று பூமி பிராட்டிக்கும் ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை செய்தார். வேங்கடாச்சலத்தை ஸ்மரித்தால் பாவங்கள் அனைத்தும் போகும். ஒரு முறை ஒரு பக்தன் ரமண மகரிஷியிடம் சென்று, சுவாமி, இந்த சம்சார பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொண்டு பெருமாளை மனதார நினைக்க கூட முடியாமல் தவித்து கொண்டுள்ளேன் என்று கேட்டாராம். அதற்கு அவர் சிரித்துவிட்டு, நீ ரயிலில் பயணம் செய்யும் பொழுது உன் உடைமைகளை உன் தலையின் மீது வைத்து கொண்டா செல்லுகிறாய்? ரயிலும் உன்னையும் உன் உடைமைகளையும் சுமக்கிறது அல்லவா? அதேபோல் அனைத்தையும் பகவானுக்கே சமர்ப்பித்து விடு, அவர் பார்த்து கொள்வார் என்றாராம். அதேபோல் நாமும் நம் கடமைகளை ஒழுங்காக செய்து பகவானுக்கு அர்ப்பணம் செய்தால் அவர் நம்மை காப்பார். அப்படிப்பட்ட பெருமாளுக்கு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை நிறைவேற்றினார் அர்ச்சக சுவாமி. அடுத்ததாக அக்னி ஆவாகனம் செய்கிறார்கள். அக்னி ஆவாகனம் செய்து அக்னி பிரதிஷ்டை ஹோமத்தை நாம் சேவிக்கலாம். मयि देवात्मनागजन्तां मय्याशीरस्तु मयि देवभूतिः दैव्याहोतारावृषन्तपूर्वेरिष्टास्याम तरुवासुवीराः उद्दण्यमानमस्य अमेद्यम् अपपाप्मानमजमानस्य गन्तो सुवानश्चन्नो भाता पृथिवीतोकसाता तत्सवतर्वरेण्यम्बर्गो देवस्य धीमहि दिगो न प्रचोदयात् जातवेदो भुवनस्यरिन्तपसो गज्जनिष्यते अग्निमश्वत्तायुरागं समीगर्भार्जनगण्यो मयो भूः कृतप्रतीको कतयो निरग्नेर्गतैः समेद्धो गतमस्यान्नम् गतप्रजस्वादगितो पखन्ति गतं पिबन्ति गदा यक्षिदेवान् आयुर्दा अग्ने हविषोरुषाणो गतप्रतीको कतयो निरेति अवतिरमन्यस्व स्वस्तिरमन्यस्व देवसविदप्रसव तत्सवतर्वरेण्यम्बर्गो देवस्य धीमहि दिगो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तावसीमितस्सुरुचो वेन आवह स भोज्ञापमा अस्य विष्टासदस्य नुदस्य वः ॐ ब्रह्माणमवाहयामि प्रजापतिमवाहयामि हिरण्यगर्भमवाहयामि पितामहमवाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदग्धकं सभयसुनास्मै ॐ सोमवाहयामि यज्ञाङ्गमवाहयामि इन्दुमवाहयामि चन्द्रमवाहयामि सोमाग्रमः इदमासनं ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः गुरोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सुप्रीतः सुप्रसन्ना वरदा भवतो ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोमः प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाकसृष्टेजमानोऽस्तु सप्तऋषीणाकं सुकृतां मित्रलोकस्तत्रिमांसदेहि ॐ प्रोक्ष मात्रादारावमादाग पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञे स्तो वायुभूते स्तो विष्णो मनसा भूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः दिवेत्मा अन्तरिक्षागत्वा पृथिव्यैत्मा कोषागत्वा आदित्यव्यञ्जनमसि पूर्णामृतन्त्वा स्तृणामि पादस्तं देवेभ्यः विष्णोस्तूपोऽसि इति प्राच्य दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तूपोऽसि पश्चिमतो विष्णोस्तूपोऽसि विष्णुमवाहयामि महाविष्णुमवाहयामि सदा विष्णुमवाहयामि यपि नारायणमवाहयामि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वनस्पत्यो देवेभ्यः छन्दस्व पृथिव्यापो गृहीष्यामि ब्रह्मण्डपप्रणेष्यामजमानवाचं गच्छ सोमापप्रणेष्यामजमानवाचं गच्छ प्रणयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाकं
శ్రీదేహి ఓం ప్రణగ కోభో యునక్త సవో యునక్తో సమిషన్నావిషపాత్రాన్ని దేవ గజ్యాగి దక్షిణప్రదో బ్రాహ్మణ తీర్థేన ఓం ప్రజామవాహయాం బ్రహ్మాణమవాహయామి ఇంద్రమవాహయామి అగ్నిమవాహయామి సోమవాహయామి అగ్నిశోమానవాహయాం బ్రహ్మాణమవాహయామి ఇంద్రమవాహయాం వసూనవాహయామి మరుతమవాహయాం రుద్రాణవాహయామి ఆపౌపస్పృశ్య ఓం శ్రీవిష్ణుమవాహయాం బృహస్పతిమవాహయాం మిత్రమవాహయామి వర్ణమవాహయామి ఆదిత్యానవాహయామి అశ్వినమవాహయాం పూషణమవాహయామి కక్షమవాహయాం కక్షే సోమవాహయామి ఉపాసయజ్ఞమవాహయామి యజ్ఞవిస్మాన్ దేవానవాహయాం సవదేవానవాహయామి ఆజ్యపాత్రే ఓం ప్రజావిష్ణుర్పమి ఇంద్రావిష్ణుర్పమి అగ్నేష్ణుర్పమి సోమాష్ణుర్పమి అగ్నిసోమాభ్యష్ణుర్పమి బ్రహ్మేష్ణుర్పమి ఇంద్రాష్ణుర్పమి వసుభ్యోష్ణుర్పమి రుద్యోష్ణుర్పమి రుద్రేభ్యోష్ణుర్పమి ఆపౌపస్పృశ్య ఓం శ్రీవిష్ణువిష్ణురం బృహస్పతిష్ణుర్పమి మిత్రావిష్ణుర్పమి వరుణావిష్ణుర్పమి ఆదిత్యేభ్యోష్ణుర్పమి అశ్వభ్యాంష్ణుర్పమి పూష్ణేష్ణుర్పమి కక్షావిష్ణుర్పమి అక్షరే సోమాష్ణుర్పమి ఔపాసజ్ఞాష్ణుర్పమి స్వేభ్యో దేవేభ్యో శృణుర్పామి సర్వదేవేభ్యో శృణుర్పామి ఆజ్యం త్రిపదశ్రయామి చిరం త్రిపదశ్రయామి అగ్నే జ్యోతిరసి సమిదస్మహ అమృతమసి వార్తమసి అంతర్గం భక్ష అంతరిత అరాతగ ప్రత్యుష్టం భక్ష ప్రత్యుష్ట అరాతగ చిత్వస్థాపన ఆత్మచ్చిద్రేణ పవిత్రేణ సూర్యస్య రశ్మి విస్మహ వాక్పతిస్థాపన ఆత్మచ్చిద్రేణ పవిత్రేణ సూర్యస్య విస్మహ దేవస్థాసితాపన ఆత్మచ్చిద్రేణ పవిత్రేణ సూర్యస్య రశ్మి విస్మహ కరసంపూర్ణావాసమిదో గృహీత్వా మూలాగ్రాభ్యాంగదగ్గస్పర్శగిత్వా అభ్యర్చ్య అక్షతాత్ ఆజ్య చరుభిః ఇమామే అగ్నైష్టగా దేవస్సంతో ఇంద్రాయ నమః అగ్నయే నమః యమాయ నమః నిరుతగే నమః వరుణాయ నమః కుబేరాయ నమః అగ్నయే నమః జాతవేసే నమః సహోదసే నమః అజరాప్రవే నమః పర్యాపసే నమః పంక్తిరాసే నమః విసర్పణే నమః వైశ్వానరాయ నమః యజ్ఞపురుషాయ నమః అవితరమణ్యస్వ అవితరమణ్యస్వ సౌస్తరమణ్యస్వ దేవసవిత ప్రసవాన్ ఓం అగంతగిత్మ ఆత్మజవేదస్తేనేద్యస్మత్తుగతాస్మాన్ తదియా బ్రహ్మత్సేనాన్నాద్యేన సమేతగ స్వాహ వాయువ్యాదాగ్నేయ అంతం ప్రజాపతగే స్వాహ నైరుత్యాదీశానాంతమింద్రాగ స్వాహ అగ్నేయ స్వాహ సోమాగ స్వాహ అగ్నిశోమాభ్యాగ స్వాహ ప్రజాపతగే స్వాహ బ్రహ్మణే స్వాహ ఇంద్రాగ స్వాహ వసుభ్య స్వాహ మరుద్భ్య స్వాహ రుద్రేభ్య స్వాహ ఆపౌపస్పృశ్యాం సవిష్ణవే స్వాహ బృహస్పతగే స్వాహ మిత్రాగ స్వాహ వరుణాగ స్వాహ ఆదిత్యేభ్య స్వాహ అశ్వభ్యాం స్వాహ పూష్ణే స్వాహ కక్షాగ స్వాహ కక్షే సోమాగ స్వాహ औपासनज्ञाय स्वाहा अग्निस्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम शिवस्वाहा ओम भूर्भुवस्व स्वाहा उदितेर्मकुस्ता देवसवितप्रासाभिः प्राणानागम्य अस्यां सुगतो श्रीश्रीनाश्विना वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गमुपासनाग्नो आघारान्तर्दोषप्रायश्चित्तार्थं मतो दिवैष्णवोत्तरघोष्के अतिरवण्यस्वा मधुरवण्यस्वा स्वस्तिरवण्यस्वा देवसवितप्रसवान् ओम अतो देवा अभन्तरागता विष्णुचक्रमे पृथिव्यास्वता विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रिधानदे पदं समोणमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदाचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः स्वधर्माणधारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि वसतिगतो अवतानि वस्पते इन्द्रस्य गज्जस्सका स्वाहा अद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः देवचक्षुरागदग् स्वाहा अद्यप्रासो पुण्यवो जाग्रभागं वस्मिन्दते विष्णोर्यत्परं पदग् स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम शिवस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अवितेर्मकुस्ता देवसविता प्रासाभिः శ్రీ వెంకటపతి అలమేలు మంగయును కలిసి ఉన్నారు తమకమున పెండ్లికిని అదే శ్రీ వెంకటపతి అలమేలు మంగయును కలిసి ఉన్నారు తమకమున పెండ్లికిని
अथ भगवतो महापुरुषस्यां श्रीमदादिनारायणस्याम् अचिन्त्या प्रमदशक्त्याभ्यगमानस्य महाजलौकस्य मध्ये परिभ्रममानानाम् अनेककोटिब्रह्माण्डानां एकतमे प्रथमव्यक्ते च वायुराकाशमदहङ्कारं व्यक्ताव्यक्तसप्तावरणैरावृते अस्मिन् महति ब्रह्माण्डे आधारशक्तिश्रीवराह कूर्मानन्ताष्टदिग्गजो परिप्रतिष्ठितानाम् अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताळाख्य सप्तलोकानाम् ऊर्ध्वभागे भूलोके भुवर्लोक सुवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षण्लोकानाम् अधोभागे महानालागमानस्य पणिराजस्य शेषस्य सहस्रपनामणिमण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीक वामन कुमुदाञ्जन पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य अष्टदिग्दन्ती सुण्डातण्डोत्तम्भिते अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोवती सिन्धुमती गन्धवत्यलकावती यशोवती त्यष्टोपरि विराजिते इन्द्राग्नीयमणिरतिवर्णवायुकुबेरगीशानाख्य अष्टलोकपालकपरिपालिते लोकालोकाचलबलगिते लवनेक्षुसुरासृतिक्षोदकाख्य सप्तार्णवपरिवृते जम्बोप्लक्षकुशक्रौञ्जसाकशाल्मलीपुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते मकेन्द्रमलय सख्य सुक्षवत्विञ्जपारिगात्राख्य सप्तकुलपर्वतविराजिते भारतकिं पुरुष हरिलावृतभद्राश्वकेतुमाला हिरण्यकर्णकवर्षाख्यडवर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुताम्बकवस्ति पुन्नागन्धर्व सौम्यवर्णभरताख्य नवखण्डानां मध्ये भरतखण्डे महासरोरुहाकार 50 विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षगोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ती कुरुक्षेत्र सममुद्रेकागा पूर्वदिग्भागे मेरोर्दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराहक्षेत्रे वेङ्कटाचले सकलदेवतासन्निधौ ममनेकजन्मसु इकजन्मनि च हे दक्षिणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्धकेषु रहसि प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातक समस्तुतक्षगार्धं दशपूर्वेषां दशापरेषां मध्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोकदामातपसङ्गातकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य श्रीहरिलोके निवासित्यर्थं द्विगुणीकृत अग्निष्टोम अतिरात्राप्तोर्याम शान्तपनवाजपेय पौण्डरीक अश्वशतकृतो पुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीविकणो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः भृग्वादिभिर्मन्वादिविशिष्टादिभिः दिव्यमहर्षिभिरुक्तं गृह्यधर्मशास्त्र पुराणेतिहास प्रतिपादित कन्यादानकल्पोक्त सकलफलावाप्त्यर्थं कन्यादानं करिष्ये। अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शन पाञ्चजन्यकौमोदकीन्दकशार्ङ्गादि दिव्यपञ्चायुधरस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैकासभगवच्छास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गेर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगारुषयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवस्य पञ्चसूवेदेन प्रवर्तमानस्य परतत्त्वविभवव्यूह अन्तर्गामी अर्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गेरसभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगारुषयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थले कारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्रागा आङ्गेरसभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगारुषयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमणिगणविजृम्भित पादारविन्दस्य अर्चावतप्रद्युम्नावतारस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्रागा आङ्गेरसभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगारुषयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवागा भक्तलोकपरिपालनागा किरीटहार केयूर दिव्याभरणभूषितागा
श्रीवत्साङ्कितवक्षस्कागां दिव्यकौस्तुभालङ्कृतागां दिव्यपीताम्बरधरागां दिव्यमाल्योशोभितागां प्रपन्नपारिजातागां निजावतारागां स्वर्णगरुडवाहनारूढागां अचिन्त्याद्भुतनित्ययौवनस्वभावलावण्य तेजोरत्नाकरागां सकलशाखाध्यायिनो अखिललोकपवित्रगोत्रागा श्रवणनक्षत्रे मकररासौ जातागा श्री श्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वरागा ऋग्यजुस्सामाधर्मण सकलवेदाध्यागनीं भार्गवत्स्यमन आप्नुमान और्वेदपञ्चानुषयप्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं प्रातुनां सुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपाम् उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे कन्यारासौ जातां भृगोः सङ्कल्पधनकां श्रीदेवीनां नियमां कन्यां वृणीत्वं वृणीमहे दास्यामि ऋग्यजुस्सामाधर्मसकलवेदाध्यागनीं कास्यपावत्सारणैर्द्वत्रगानुषयप्रवरान्वित कास्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीम् अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहूश्यामलाङ्गी रेवते नक्षत्रे मीनरासौ जातां कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पधनकां भूदेवीनां निमिमां कन्यां वृणीत्वं वृणीमहे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां धास्यां तुभ्यं ब्रह्मलोकचिकीर्षका कन्यां स्वलङ्कृतां सात्वीं श्रीलागसमेधसे प्रगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताम् इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु। ಓಂ ನಮೋ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ, ಓಂ ನಮೋ நாராயணாய, கோவிந்தா கோவிந்த. மகா சங்கல்பம் கன்னியாதானம் கைங்கரியங்களை சேவித்து இப்பொழுது மாங்கல்ய பூஜை சேவிக்க இருக்கிறோம். எம்பெருமான் திருவேங்கடவன் தன் தேவியர்களின் கழுத்திலே அணிவிக்கும் மாங்கல்யங்களுக்கு முறையே பூஜை நடைபெறுகிறது. பெருமாளிடம் மனதை வைத்து அவனிடம் மாறாத பக்தி கொண்டு அவனையே வேண்டி வழிபட்டு வருபவர்கள் இறுதியில் அவனுடைய திருவடிகளையே அடைவார்கள். கடலை அடையும் நதி கடல் மையமாக ஆவது போல் இடையாறாத ஆராதனையால் பகவானை போற்றும் பக்தர்கள் பகவான் மயங்கி வசமாகி விடுகிறான். சரணாகதி என்ற சொல்லுக்கு அடைக்கலம் புகுதல் என்று பொருள். குழந்தை தாயிடம் எப்பொழுது அடைக்கலம் புகும், அதாவது தான் செய்வதற்கு இனி ஒன்றும் இல்லை என்று உணரும் பொழுது அப்பொழுது தன் தாயிடம் அடைக்கலம் புகுமாம். அதேபோல் தன்னை பூரணமாக பகவானிடம் ஒப்படைத்து விட்டு பின் தான் செய்யும் செயல்கள் அனைத்தையும் செய்விப்பவன் அவன் என்ற உயர்நிலையை பக்தன் அடைகிறான். அதனால் உதார மனதை உடையவனாகவும் அடியார்க்கு இனியவனாகவும் ஆண்மையும் வீரமும் பொருந்தியவனாகவும் தான் ஒருவன் போதாதென்று தம்பிகளுடன் அவதரித்தவன் ஸ்ரீராமன் நீயே. ஆகவே உன்னையன்றி ஒருவரையும் அணுகேன் என்று பக்தர்கள் வேண்டும் வேங்கடவன் தாயார்களுக்கு அணிவிக்கும் மாங்கல்யங்களுக்கு இப்பொழுது மாங்கல்ய பூஜை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. மேலான நாமமாக கருதப்படுவது, அதாவது பேராயிரம் உடைய திருமாலின் திவ்ய நாமங்களுள் எல்லாம் மிகவும் மேலான நாமமாக கருதப்படுவது ஸ்ரீ ராமநாமமாகும். ராமநாம மந்திரத்தை நினைத்தவுடனே அப்பெருமானின் தர்மம் நீதி இவற்றை உருவாகமாக கொண்டு கையிலே கோதண்டம், தலையிலே ஜடாமுடி, வாக்கிலே சத்தியம், கண்களிலே கருணை வெள்ளம் இப்படி நின்று அருளுமாய் ஸ்ரீ ராமச்சந்திரமூர்த்தி நமக்கு காட்சி தருகிறார். ராம பிரானை நாம் வணங்கினால் இந்த பிறவிக்கு வேண்டிய எல்லா நலன்களையும் வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய எல்லா செல்வங்களையும் நாள்தோறும் கிடைக்கும். அப்படிப்பட்ட ராமபிரான் ஆகிய அந்த திருமாலுக்கு திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திலே மாங்கல்ய பூஜை நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. தேவியர்கள் இருவருக்கு கூட அந்த மாங்கல்யங்களை இப்பொழுது அணிவிக்க செய்கிறார்.
ஸ்ரீயப்பதியான ஸ்ரீமன் நாராயணன் இருள் தருமா ஞாலமாகிய இம்மண் உலகிலேயே மக்கள் சம்சாரமாகிய பெருங்கடலிலே விழுந்து துன்பப்படுவதைக் கண்டு அவர்களுக்கு மெய்யறிவு புகட்டி கரையேற்றி நல்வழிப்படுத்த கருணை கொண்டார். வேதங்களையும் புராணங்களையும் மற்றும் சாஸ்திரங்களையும் தோற்றுவித்தார். ஆனால் மக்கள் அதை அறிந்து நல்வழி படவில்லை. சீட்டுக்கு அடிபணியாதாரை சேனையை திரட்டி வெல்வதைப் போல என்று நாராயணன் தாமாகவே மச்சமாகவும் ஆமையாகவும் வராகம் நரசிங்கம் வாமனனும் பரசுராமன் ராமனும் பலராமன் கண்ணனாகவும் அவதாரம் செய்தார்கள். அப்படிப்பட்ட பெருமாளுக்கு இதோ மாங்கல்ய பூஜை நாச்சிமார்களுக்கு நடைபெறுகிறது. प्रजापतिस्समगं राधानमसृजता मन्त्रगो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता हदः सीता सावित्री श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। प्रजापतिस्समगं राजानमसृजता तन्त्रगो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अधः सीता सावित्री हरण्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि। माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्तु मुहूर्तोऽस्तु। అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక మోదముతోనొక మాని మొదల బోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక మోదముతోనొక మాని మొదల పోసిన నీరు పాదుకొని కొనకెక్కి ఫలించుగాక ఆదిమూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక ఆదిమూలమగు హరి ఆతుమ సేవించక ఏ దైవములగన్నానేమి సెలవు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక ఇతరుల వేడుకొంటేనేమి గలదు అతడు లక్ష్మీకాంతుడన్నియు నొసగుగాక
తల్లి భుజించిన వెల్ల తగు గర్భము శిశువుకు ఎల్లగాగ పరిణామమిచ్చుగాక. తల్లి భుజించిన వెల్ల తగు గర్భము శిశువుకు ఎల్లగాగ పరిణామమిచ్చుగాక. బుల్లము లోపలి హరికొసగని పూజలే భాగురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతగా మమ స్వాహా. ఇమాన్ లాజానాపపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవసనాన్ తథగ్నేరణమణ్యతాం. ఇయన్నార్యుపభృతేగ్నౌ లాజానాపపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతగా మమ స్వాహా. ఇమాన్ లాజానాపపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవసనాన్ తదగ్నేరణమణ్యతాం. ఇయన్నార్యుపభృతేగ్నౌ లాజానాపపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేధంతాం జ్ఞాతగో మమ స్వాహా. ఓం భూస్వాహా ఓం భూస్వాహా ఓం భూస్వాహా ఓం భూర్భువస్వాహా. అదైర్వగ్స్తాసామి ప్రాణానాగమ్యాస్యాం శివతోస్య శ్రీనివాస్వరా వైవాగమోత్పర్మానమోపాసనాగ్నో అదహో మాతదో ప్రాచితార్థం అతోది వైష్ణవోత్తరఘోష్యే అదైర్మణ్యస్వాం అభిమణ్యస్వా సౌస్థైర్మణ్యస్వా దేవసవిదప్పసమా. ఓం అతో దేవా అవంతనాత విష్ణుచక్రమే పృథవ్యా తథా విస్వాహ. ఇదం విష్ణుచక్రమే త్రేధానదే పదం సమూఢవస్య వాగం సురే స్వాహ. త్రీణి బుధాచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః స్వధర్మాణిధారయన్ స్వాహా. విష్ణో కర్మాణి వస్తగతో అవతాని వస్పసే ఇంద్రస్సగజ్జస్సగ స్వాహా. అద్విష్ణో పరమం పథకం సదా పశ్యంతి సూరయః దేయోజక్షరాగదగ్గ స్వాహా. అద్విప్రాసో పుణ్యభోజాగ్రవాగం వస్విందతే విష్ణో అర్ఘత్పరం పదగ్గ స్వాహా. ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం శుస్వాహ ఓం భూర్భువస్వాహ. ఓదైర్వగ్స్తాసావీః ప్రాణానాగమ్యాస్యాం భూతో శ్రీ శ్రీనివాస్వరా వైవాగమోత్సకర్మాంగమోపాసనాగ్నౌ తమసాద్గుణ్యాత్తాష్టమం గరిష్యే. ఉదయమన్యస్వా ఉదయమన్యస్వా సౌస్థిరమన్యస్వా దేవసవిదప్రసువా. ఓం యదస్య కర్మణో త్రివిధసంవిద్వాన్విభాకరం అగ్నయే స్వాహా. అగ్నయేన్నాదాగ స్వాహా. అగ్నయేన్నపతగే స్వాహా. ప్రజాపతగే స్వాహా. ఇంద్రాగ స్వాహా. విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా. సర్వాభ్యో దేవతాభ్య స్వాహా. సర్వత్రైవాదిష్టకం సర్వత్రైవానాదిష్టం తస్మై స్వాహా. అగ్నయే కృతే స్వాహా. వాస్తుపదే నమో వాస్తుపతగే స్వాహా. యన్మ ఆత్మనో మిందా బుధగ్నిసత్రా జతవేద విచర్షణ స్వాహా. పునర్దక్షిణాత్ పునరంతరో బృహస్పతిః పునర్వింశక్రాత్మక్షో స్వాహా. ఇష్టేభ్య స్వాహా. ప్రధనిష్టేభ్య స్వాహా. ప్రవిచంద్రష్టే స్వాహా. నిష్కృత్యై స్వాహా. దౌరాద్యై స్వాహా. దేవీభ్య స్వాహా. తనోభ్య స్వాహా. హృద్యై స్వాహా. సమృద్ధ్యై స్వాహా. సర్వసమృద్ధ్యై స్వాహా. ఓం ఏదో యదశీమహి స్వాహా. సమితసే తేజోసతే జోమయిదేగ స్వాహా. యమస్య ధీమహి మృత్యోర్మే పాగ స్వాహా. సూర్యస్య ధీమహి చక్షుర్మే పాగ స్వాహా. సోమస్య ధీమహి చిత్తం మే పాగ స్వాహా. వాయోర్ధీమహి ప్రాణాన్మే పాగ స్వాహా. బ్రహ్మణో ధీమహి బుద్ధిం మే పాగ స్వాహా. ఓం సప్తతే అగ్నే సమిద సప్త జగ్మా సప్తర్గ సునామ ప్రయాణి సప్తహోత్రా సుధాత్వా సంతయో నీరాపణస్వ. హృదయన స్వాహ. అగ్నిర్భక్తగ్గ స్వాహ. వేదిర్భక్తగ్గ స్వాహ. జౌర్భక్తగ్గ స్వాహ. పృథివీభక్తగ్గ స్వాహ. అగ్నిర్జైర్నగ్గ స్వాహ. వేదిర్జైర్నగ్గ స్వాహ. జౌర్జైర్నగ్గ స్వాహ. పృథివీజైర్నగ్గ స్వాహ. ఓం సప్తతే అగ్నే సమిద సప్త జగ్మా సప్తర్గ సునామ ప్రయాణి సప్తహోత్రా సుధాత్వా సంతయో నీరాపణస్వ. హృదయ స్వాహ. ప్రధానవిద్వారనుష్టపతేన పూర్ణవాసంజో మనసా ప్రజాపతగే స్వాహ. ఆజ్యశేషం ఇంద్రాగజభామి స్వాహ. అగ్నిస్త్రిపద వేదస్త్రిపద యోస్త్రిపద పృథివేస్త్రిపద బ్రహ్మాద్యాస్త్రిప్యంతామధైర్మకుస్తాస్తైర్మకుస్తా దేవసవిదప్రాసావీః. దక్షిణాసదామాయతాన్ దేవతాభ్యో నమః. యదా సుఖం యథాస్థలం దృష్టాపయామి.
पवित्रं मे भूयात् पूर्णवश पूर्णं मे भूयात् रसन् मे भूयात् अक्षतवक्षत्तेजहोमि अक्षतो मे चेष्टाः प्राच्यां दक्षिणागां उदीच्यां प्रतीच्यां मूर्ध्वागाम् अधरागां मार्जयन्ताम् पश्चिमतः परियोपनगा दक्षिणतः परियोपनगा उत्तरतः परियोपनगा पश्चिमतः विष्णुस्तुतनमसे दक्षिणतः विष्णुस्तुतनमसे उत्तरतः विष्णुस्तुतनमसे प्राच्यां विष्णुस्तुतनमसे सर्वान् प्रथमोक्ष्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्विप्रोक्ष्य आप्यागन्ताम् इति जुहोति आप्यागन्ताम् आपवोषधगमरुतां प्रसुतगच्छदिवं गच्छतो न वृष्टिमेरगस्वाहा सुद्यन्तां देवसदनकं सुद्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वज्ञाकृतं भवेत् अग्निर्मा कृतगादित्यस्वमो नमः प्रगागशं समदग्ने कश्यपस्य प्रगागशं यद्देवानां प्रगागुषं तन्मे अस्तु प्रगागुषं दीर्घागत्माय बलाग शताग शतं च वर्तसे प्रगागुषं भूतिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निर्मा कृतगाद्भूतिः आदित्यस्वमो नमः प्रगागशं जमदग्ने कश्यपस्य प्रगागशं यद्देवानां प्रगागशं तन्मे अस्तु प्रगागशं दीर्घागत्मागा बलागा सतागा सतं च वर्तसे प्रगागशं त्वम् आपादिष्टामगापवस्तानपूर्ध्यदधातना प्रतिरिव मातरः तस्मा अरङ्गमा भोगस्सक्षगा गजन्मतः आपो धनगताधनः यत्ते अग्ने जस्ते नाहं तेजस्ते भूयासं यत्ते अग्ने वक्षस्ते नाहं वक्षस्ते भूयासं यत्ते अग्ने हरस्ते नाहं हरस्ते भूयासं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुतासना कृतकृन्दमयादेव परिपूर्णं तदस्ते प्राशित्तानि विषाणि सर्वकर्महत्तकान् वै यानि तेषामशेषेणाकृष्टान् स्मरणं परं कागेण वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेस्वभावात् करोमि नारायणागेत् समर्पयामि भगवत्समाराधनं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणेन महासोमाग्रमः पुनःपाद्यं प्रवर्ग्यं प्रदाचमयं समर्पयामि यदा सुखं विधास्तं दृष्टापयामि सुवनार्थं क्षेमाय अग्नये नमः आद्योपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आदित्योपगच्छ तत्स ब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री श्रीभूमिनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु நாம் இப்பொழுது லாஜஹோமம் பிரதான் ஹோமத்தை செவித்தோம். அடுத்ததாக வாரணமாயிரம் கைங்கரியத்தை செவிக்கிருக்கிறோம். வாய் நல்லார் நல்ல மறைவோதி மந்திரத்தால் பாசிலை நாணல் படுத்து பருதி வைத்து காய்ச்சின மா களிறு அன்னான் என் கைப்பற்றி தீவலம் செய்ய கனாக்கண்டேன் தோழி நான் என்கிறாள். மங்கள விழாவான திருமண விழாவில் வேதங்கள் ஓதப்படும். வேதத்தை சரியாக ஒலிக்கவில்லை என்றால் பிரதிபலனை தரும். தோழி, வில்லை ஒத்த புருவமும் ஒளி பொருந்திய முகமும் உடைய என் தமையன்மார்கள் வந்து ஓமகுண்டத்தில் நெருப்பை பாரித்து என்னை அதன் முன்னே நிறுத்தி அச்சுதனான கண்ணபிரானுடைய கைமேல் என் கை வைத்து பொறிகளை அள்ளி என் கையில் வைக்க நானும் கண்ணனும் சேர்ந்து நெருப்பில் சேர்ப்பதாக கனவு கண்டேன் என்று கூறுகிறாள். அதேபோல் அப்படி அந்த பாசுரங்களை ஏற்றி பாடிவிட்டு அதை தொடர்ந்து மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார். மாலா பரிவர்த்தனம் என்பது எம்பெருமானுடைய கழுத்திலே இருந்த மாலை ஸ்ரீதேவி பிராட்டிக்கு அணிவித்தார் அர்ச்சக சுவாமி. லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த ஸ்ரீதேவி பிராட்டி மாலையை அணிந்து கொண்டு திரும்பவும் பகவானுக்கே சமர்ப்பிக்கிறாள். ஸ்ரீதேவி பிராட்டி கழுத்திலே இருந்த மாலையானது
பகவான் வேங்கடவனுக்கு சமர்ப்பிக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. சப்தகிரி வாசனே வேங்கடவனே கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த வேங்கடவன் மாலையை சற்று நேரம் அணிந்து கொண்டு அதன் பிறகு பூமி பிராட்டிக்கு அனுப்புகிறார் அந்த மாலையை கொண்டு சென்று எம்பெருமான் திருவேங்கடமுடையானுடைய சார்பிலே தாயாருக்கு பூமி பிராட்டிக்கு அணிவிக்கிறார்கள். வசுந்தரா ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா என்று. இவ்வாறாக அந்த பூமி பிராட்டியும் மாலையை அணிந்து கொண்டு அந்த மாலையை திரும்பவும் வேங்கடவனுக்கே கொண்டு சென்று சாத்துகிறார். இப்பொழுது வேங்கடவனுடைய தோள்களை அலங்கரிக்கிறது அந்த மாலையானது. ஏடு கொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று ஆக 3 முறை மாலா பரிவர்த்தனம் நடைபெற்று இப்பொழுது ஸ்ரீதேவி பூதேவி பிராட்டிமார்களை பகவானுடைய பக்கத்திலே ஆசீனப்படுத்துகிறார்கள். அதை தொடர்ந்து அக்ஷதாரோபணம், தலம்பராலு கைங்கரியம், அந்த அக்ஷதையை மூவரின் சிரசின் மீதும் தூவி அக்ஷதாரோபணம் கைங்கரியத்தை சேவிக்கிறோம். அதை தொடர்ந்து மங்கள நீராஜனத்தையும் சேவித்துக்கொண்டு இந்த திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தை நிறைவு செய்ய இருக்கிறோம். அந்த பகவானுடைய கருணா கடாட்சம் நம் மீது என்றென்றும் கிடைக்க வேண்டும் என்ற அக்ஷதாரோபணத்தை சேவித்து இத்துடன் அந்த పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పెట్టనే పెద్ద తురుము పెండ్లి కూతురు. నమో
ఓం